Good evening, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to Yog Vaashishtha knowledge study group evening sessions. Today we are on 30th session. नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सायंकाल के सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग 30वें सत्र में पहुंच चुके हैं। तो रोज की तरह हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। लेट अस ऑल क्लोज आवर आईज। अपनी आंखें बंद कर लें। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और छोड़ दे। गुरुदेव कहते हैं भूतकाल सुखद या दुखद त्याग करने योग्य है। टेक अ डीप ब्रीथ इन और अपने भूतकाल का त्याग करके वर्तमान क्षण में आ जाए। यह वर्तमान क्षण नया है। इस वर्तमान क्षण में ओम का नाद कर इसका स्वागत करते हैं। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले Let us awaken the divinity within. गुरु का आवाहन कर ले। आवाहनम 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 पुनः पुनः। गुरु वंदना कर लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। Let us pray to the divinity. गुरु से प्रार्थना कर ले। अपने मुख से निकलने वाले हर एक शब्द, हर एक वाणी, अपने सारे कर्म एवं विचार, अपने बुद्धि के अंदर जागृत होने वाला विवेक, अपने स्मृति के ऊपर तैयार हो रहे इंप्रेशंस,
और यदि अब भी थोड़ा भी अहम का भाव बाकी है तो वो भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें। मुक्ति की राह पे चलने वाले हम लोग, मोक्ष की राह पे चलने वाले हम लोग, यदि अभी इसी क्षण मुक्त हो जाए तो बाकी सारा जीवन या किसी कारणवश यहाँ पे और एक बार या बार बार आना पड़े तो वो भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें। अपने भीतर और बाहर गुरु का सानिध्य महसूस करते हुए धीरे से अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। Slowly and gently you may open your eyes. Jai Gurudev. So let's begin with our today's session. We are in chapter number 3, Utpatti Prakaran, the creation of this universe, where Vaashishtha Muni is explaining to Lord Rama, how this entire universe is created, and very beautiful questions Rama keeps asking in between, and to explaining further how this entire world is actually an unreal world. Here Vaashishtha Muni tells him the multiple stories. That is what we are seeing, that as a Mandapa Akhyan, the Leela, Saraswati and Padmraja Akhyan. Akhyan means the stories, the Vrittanta, things associated with that. So we saw how this beautiful couple called Padmraja and Leelavati happily lived, and she starts worrying about the future, how she gets the boon from goddess Saraswati, how using those boons, how she retained the soul of the Padmraja in that hall itself, and then how, because of the blessings and the teachings of goddess Saraswati, she learns how to travel through the Sukshma Deha, the subtle body, throughout this different spaces. So we also saw there is a space called Bhuta Akash, there is a space called Chitta Akash, the space of the mind, and there is something called a Chida Akash, the one ultimate space. So she happens to go and see that particular Padmraja, the king. He is ruling some other kingdom. Now he is already 16-year-old, and how he kind of forgotten about other things, and he's just started living his life in the next imagined birth. So she also sees the other people around, she comes back, get worried, she calls upon the meeting, but she saw everybody is fine. And now she actually invites goddess Saraswati and then start asking multiple questions. And then goddess Saraswati is answering each and her questions so that she can understand what is the reality and what is not real. So she also tells her the story of that Vaashishtha Muni as a Brahmana who is living his life with Arundhati, his wife, and then she happens to go and visit that, whatever that he exactly same things happened with him also. He saw this kingdom, kings, all the ceremony and all that, and he got stuck into that. He also wanted to be like that. He got this birth, and exactly the same thing what you did now, you did in that birth also. You prayed to me, I gave you the boon, and that same Padmraja, that Vaashishtha Muni soul is still there in that home. Now explaining all these things, she gets confused, and finally she tells her many things, because of which that she is now started realizing what the truth is. Now she again questions that now I really want to go and see. I saw that birth of my husband, next birth. Now I want to see the birth, what is happening in the, because she still have not practically seen it. So still there is an iota of confusion or the doubt in
Leelavati's mind. So she wants to go and see. I want to see that birth. So again, they happens to meditate, and then they travel to that space, Chidakash, where she gets into the house of that Vasishtha Muni as a Brahmana. There she sees there is a son of that Vasishtha Muni, and he is, and the entire family is in all sorrow, because they just lost their mother and father. So because of that, they are very unhappy. So the name of the son is being said as a Jeshta Karma here. Is the elder son. So that is what is happening there. By looking at that, both of them appear there. And then the son is obviously the son of Arundhati, means the son of Leelavati also. So with that kindness and that motherhood, she kind of bless that son, and the very moment she blesses him, they appear to come to the knowledge, and they all forget their sorrow. The same thing happens with the other people around. So the moment that happens, she comes out of that, and she disappears. Both of them disappears from there. Now again they meet in this Chidakash, and then there is a very beautiful description of what both of them see. Very, very descriptive thing has been how they see all the different types of yonis, means different types of births. They see all the animals, they see all the demons, they see all the gods and goddesses, they see all the Gandharva, Yaksha, Kinnara, all sorts of, they see all the Rishimunis, they see all the saints, they see all the rivers, they see all the mountains, everything very beautifully explained. They see all the sun, the planets, Milky Ways, and this universe, entire universe. So all these things now they observe, that is what is going on. So now this story goes ahead, and now she explains that, okay, I thank you so much that because of you I could see all these births, 3 births at a time. I saw that one birth, I saw the last birth, and I saw the birth of my husband, the next birth. So now I have really realized the true nature of this life. That's how this life actually keeps on. And then likewise, she have a very beautiful conversation with Saraswati, and finally even she remembers even her older births also. So likewise, she remembers around 800 such birth, where she has been taken a birth into different forms. Sometimes she becomes Bilin, sometimes she becomes some other form, sometimes she goes into different forms of birth. So she remembers all that. That is also very beautifully explained here. We'll not get into details. We can always read the book. All have been anyway reading the book. So now once all these things happens, she's feeling very grateful to Saraswati, because of her, that she is now established herself in that, able to travel into the Chittakash, the Chidakash, with her subtle body. It's like kind of blessing, it's kind of siddhi that she acquired. So now concluding this, like she says that, oh, because of all the entanglements, the Kam, Krodha, Lobha, Madha, Moha, Matsara, all this greed, all this jealousy, all these other entanglements, because of all these negative things, I have been entangled into all these things. I could not realize the truth, and because of that only I have to keep on taking all these 800 births, one after another. But now that because of your blessing, I am able to realize the truth. Yeah. So she says that she also realized that just because I prayed to you and you came into my life, I realized this ultimate truth,
But the one, my husband, look at him. He has not thought about all these things. He never thought about the moksha, mukti. The moment he died, he started imagining his own life because he still have desires to rule the world, rule the kingdom, and he has just taken that next birth or so-called birth, imaginated birth, just in imagination. He's again ruling the kingdom. So like that. So he's still in ignorance. So here Leelavati questions that, okay, I have seen this, I have seen this birth. Now I want to go ahead and see what's happening with that king. My but next birth of my husband, what is happening with him? As I am able to travel now, I want to go there. And that is what she puts up a request to Saraswati. So that goes as a kind of Leelavati Akhyan chapter number 5. So that story will come. So we'll see that story tomorrow. Now let us try to understand what are the takeaways that we see from what we have seen till now. And then we'll translate that into Hindi also. So we see that based on our actions, our karmas, the kind of sanskaras that we adopt in a particular lifetime, having such a great impact that we tend to, at the time of last moment, whenever we will pass away, those kind of impressions are become so strong that moment of time that you happen to take birth accordingly. It may or may not in line with the karmas that you did, because we already saw that the karma of the Brahmana was very different, but just because of his vasanas, just because of his desires and craving, he happened to take a birth of the king. And the sanskaras that he carried forward, they become so strong. Those sanskaras, those impressions became so strong. So even at the time of last moment also, instead of asking or seeking for mukti or moksha, he again imagined his next birth as a king only. So how important for us while walking on this path, while doing all your purushartha, dharma, artha, kam and moksha, while fulfilling our daily routine duties, but still how you can be detached from them. No, you cannot drop karmas anyway. You got to do actions. No, so doing all these practices over a period of time, how we can create those good deeds or good sanskaras, no? Wipe out the past one and create new. No? Anyway, we also pray, no? Gurudev says that the past is just worth dropping. Anyway, it's a dream. It's gone. Even this also might be a dream. Who knows? That is what we are getting to hear here in Yog Vaashishtha. So if at all it is like this, then why we are worried about these small things? We are running after so much, running after in a rat race after money. That moha of not just money, it could be even about the opposite sex, it could be even about the objects, it could be even about the situation that we think such kind of situation should come in my life. Why we are running so much after all these things? What is the need of this? Why can't we just sit and relax? Why can't we just adopt the knowledge that has been imparted by our master to us? Just do these practices which will take us along, which will also make us realize our own true nature, who we are, why we are here, what is the purpose of my life, why am I here? Asking such questions will move us towards that ultimate goal, which could be mukti or moksha. Mukti or moksha does not necessarily mean that you got to die. Deha mukti and videha mukti both are possible. No, you can be free right now in this life itself. And when rest of the life you will just keep on working, as if you don't exist. You'll just keep on contributing something to everybody, including yourself. There will not be any materialistic goals that will remain in your life. Even if you happen to do something, you'll start doing with your all fullest possible potential.
You can become that small and smallest when it comes to the matter of your ego, and you can become that हरि के जो विराट रूप जो कहते हैं ना, हरि के हजारों हाथ. When it comes to a matter of executing a seva project, it is not just Someshwar will do it, not just Sangeeta will do it. Hari ka hazaron hath, you will take virat roop, no? Because nothing, you know that you are smaller than smallest, and you are bigger than biggest. No, you'll just take a call and then you just do avahan, and you will notice that so many people join hands with you, and just the sankalpa of the master will manifest through many hands. No? No, the smaller than the smallest and the bigger than the biggest, you'll start experiencing this in our own life when we understand that this truth, that I'm not just this body, no? I'm not just this small little tiny limited intellect, no? I'm not just bound by all these five senses in my life. And then in Shiva Sutra, Gurudev explained, then when such realization happens, then apashu shakti, amanusha shakti, no, infinite source of energy will dawn you. And haven't we seen that just within 40 years of lifespan, how Gurudev have touched upon so many lives, so many. Vasudhaiva Kutumbakam, this entire world is my family. And he is reaching out. No? In 2022, there will be a World Cultural Festival which will be hosted in United States. US may host होने वाला है WCF. Again, we will witness that Vasudhaiva Kutumbakam, this whole world is my family. तो हम भी तो उन्हीं का अंश है, हम भी तो उस ईश्वरी शक्ति का गुरु का है, अंदर भी तो वही बसते हैं. तो वही 24 hours में, वही 24 घंटे में, why we cannot do? No, he's doing so much. Why we cannot just be one of his hand to reach out to the people, to make them realize why you are stuck in small little things here and there. Come on, wake up, come to the reality, wake up to the reality, and know your own nature, which is infinite love, which is infinite source of energy, which is there within you. Why are you running after here and there to seek love, to seek joy? You are the fountain of joy. That realization comes when we dawn into this knowledge. Such a beautiful takeaway, na? Very nice. Huh? Feeling so much grateful to this knowledge, feeling so much grateful to this master in our life. Amazing. अब इसको थोड़ा हिंदी में भी हम लोग ट्रांसलेट कर लेते, अनुवाद देख लेते, और फिर इस चर्चा सत्र को आपके लिए हम खुला कर देंगे. जरूर हम आपका भी अनुभव इसमें सुनना चाहेंगे कि आपके जीवन में योग वशिष्ठ से क्या परिवर्तन हो रहा है, या जो कुछ भी हम लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका आपका क्या उसका ओपिनियन है उसके बारे में. तो थोड़ा भी हिंदी में अनुवाद देख लेते हैं. हम लोग अभी योग वशिष्ठ के तीसरे प्रकरण तक पहुंच चुके हैं. उत्पत्ति प्रकरण यह कहलाता है, और यहाँ पे पूरी सृष्टि, इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग है. कहानी के अंदर कहानी यहाँ पे सुनाई जाती है. उसके अंदर वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को उत्पत्ति प्रकरण के बारे में समझा रहा है, बता रहे कि कैसे तुम आत्म स्वरूप ही हो, कैसे यह बाकी की यह जीव सृष्टि जस्ट एक मिथ्या है, एक इल्यूजन है. इसको समझाने के लिए प्रभु रामचंद्र जी को वह कथा सुनाते हैं, मंडपाख्यान, लीला सरस्वती और पद्मराजा का कहानी. तो हमने स्टोरीज, 1 स्टोरी, 2nd स्टोरी, 3री स्टोरी और आज 4थी स्टोरी भी देखेंगे. अलग अलग स्टोरी के माध्यम से इंटरलिंक है सारी कहानी, एक कहानी दूसरे से संबंधित है. वह कहानियों को हमने देखा. तो कैसे जो पद्मराजा और उनकी पत्नी लीलावती बड़े ही सुख से अपने वैवाहिक जीवन का, अपने राजकीय जीवन का आनंद लुत्फ उठाते रहते हैं. किस तरह से वह लीलावती को फिर चिंता हो जाती है, भविष्य की चिंता, जो हमें भी अक्सर सताती है. तो बोलते कि यह तो अभी तो ठीक है, लेकिन फिर फ्यूचर में भी क्या ऐसा रहेगा. इस प्रकार की चिंता को लेके तपश्चर्या करती है. सरस्वती उन्हें 2 वरदान दे देती है, और वो दोनों वरदानों की वजह से उनकी जब पति की मृत्यु हो जाती है पद्मराजा की, तो उनका सोल वहीं पे रहता है मंडप में.
और फिर वो उनके शरीर को भी फूलों से आच्छादित कर देती है। सरस्वती की कृपा से वह सूक्ष्म देह धारण करके चिदाकाश में प्रवेश कैसे करना है वो सीख लेती है। और फिर वो चिदाकाश में प्रवेश करके वहां पे इनको देखती है। अपने राजा जो है उनको 16 साल के 16 वर्षीय वो दरबार में एक राज्य करते हुए दिखाई देती है। तो वहां पे उनको मंत्रीगण भी दिखाई देते हैं। तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे ये सृष्टि कहीं खत्म तो नहीं होगी, कहीं मर तो नहीं गए सब लोग। फिर से रिटर्न आके देती है, सभा बुलाती है, सब लोग वहां पे आती है। तो उनका मन थोड़ा शांत होता है, लेकिन मन में कई सारे प्रश्न उठते हैं। तो फिर सरस्वती देवी को बुलाते हैं, उनसे ये प्रश्न करते हैं। सरस्वती देवी उनका एक 1 बाय 1 क्वेश्चंस के सारे आंसर देके उनका सांत्वन करती है। फिर उनको सब कुछ भी सिखाती है। एंड देन लीलावती बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न यहाँ पे पूछते हुए दिखाई देती है। फिर वो उनको कैसे वशिष्ठ मुनि जो ब्राह्मण रहता है, जो उनका पहला जन्म रहता है अरुंधति, और वो उनके बारे में बताती है। वो सब कुछ होता है। फिर वो प्रश्न पूछती है कैसे वो 8 दिन वहां पे सिर्फ 8 दिन हुए तो कैसे क्या ये हो गया, इस तरह के प्रश्न पूछती है। फिर वह बोलती कि नहीं नहीं चलो मुझे है ना अभी जाके वहां पे जाके देखना है कि वशिष्ठ मुनि के घर पे अभी क्या चल रहा है। फिर से वही यहाँ पे आते हैं। वो मध्य रात्रि का भी सुंदर वर्णन यहाँ पे किया है, किस तरह से आराम से यह संवाद करते हुए दिखाई देते हैं। अलग अलग प्रश्न लीलावती पूछती है, सरस्वती उनके उत्तर देती जाती है। एंड फिर एक वक्त ऐसा आता है, रात्र जो नित्य निशा गुजर जाती है और वो दोनों जाके आराम से ध्यान मग्न हो जाते हैं। फिर जैसे ही वो दोनों ध्यान मग्न होता है, अतिवाहिक शरीर दोनों का स्वरूप लेके वो फिर वहां से निकल जाते हैं चिदाकाश में। फिर चिदाकाश में पहुंच के फिर वो जो वशिष्ठ मुनि जो ब्राह्मण रहता है उनके घर पे जाते हैं। तो वहां पे देखते हैं कि सब बड़े दुखी दुखी बैठते हैं, क्योंकि 8 दिन प्रतिकूल वातावरण वहां पे होता है। तो फिर जाके उनको पूछते हैं कि भाई आपके दुखों का कारण क्या है, आप क्यों इतने दुखी हो। तो बोलते अभी अभी 8 दिन पहले मेरे माता पिता गुजर गए हैं, इस वजह से हम लोग सब दुखी है। आप तो वन देवी हो, जैसे अवतारित रूप में यहाँ पे आए, उनको दिखते भी है। तो वन देवी जैसे अवतारित रूप में आप यहाँ पे आए हो, आप ही कृपया हमारे दुखों का निवारण करें, हमें मार्गदर्शन करें। तो वो अरुंधति लीलावती के रूप में जो होती है, अरुंधति माने उसकी तो माई हुई। तो ज्येष्ठ कर्मा जो उनका पुत्र रहता है, ज्येष्ठ पुत्र, तो उसके सर के ऊपर हाथ रखती है तो उनके दुखों का निवारण हो जाता है। और ये यहाँ पे दोनों अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर वहां पे बड़ा सृष्टि का पूरा अच्छा वर्णन किया हुआ है यहाँ पे। वेरी लिटरेचर इज वेरी गुड। पूरा वर्णन करते हुए दिखाई देते हैं उनको। फिर कई सारे रिवर्स, ओशंस, माउंटेन्स, मेरू पर्वत, कई सारे यक्ष, किन्नर, देवी, देवताएं, नो कई सारे प्रकार के प्राणी मात्र, कई सारे के प्रकार के असुर, देवी देवता, सारा कुछ उनको दिखाई देता है। सूर्य दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता है, मिल्की वे जो अपनी आकाश गंगा है वो उन्हें दिखाई देती है। सब बड़ा सुंदर वर्णन इसका चिदाकाश का वहां पे वो किया गया है कि किस तरह से यह सब सृष्टि में यह सब कुछ होता है। तो लीलावती के मन में प्रश्न तो अभी भी होते हैं। तो वो लीलावती उनको पूछती है कि देखो, मैंने तो फर्स्ट टाइम गई थी वहां पे धर्मराजा के दरबार में, तब तो मैं किसी को कुछ दिखाई नहीं दी, लेकिन यहाँ पे हम लोग गए तो मेरे पुत्र को मैं कैसे दिखाई दी, ये तो मेरे को समझ में नहीं आता है, तो कृपया मुझे बताएं। तो बोले जब तुम उसको वहां पे भेंट करने गई थी, तब तुम्हारे मन में क्या था कि ये रियल वर्ल्ड है और वो अनरियल वर्ल्ड है, इसकी वजह से तुम इसी जड़ देह को सत्य मान के बैठी हुई थी, इसलिए तुम वहां पे किसी को दिखी नहीं। लेकिन तुम अभी इस वक्त तुम जो जिस स्टेट में हो वहां पे तुम पूरी तरह से ऐसे मान चुके हो कि यह देह ना तो मेरा पूरा ये जड़ देह मेरा अपना नहीं है, अपने सूक्ष्म। तो इसलिए तुम वहां पे जाके वो सिद्धियां तुम्हें प्राप्त होगी है कि तुम अपने आप को अलग अलग जगह पे लेके भी जा सकते हो, और जहां तुम्हें चाहिए वहां पे तुम्हें अवतरित भी तुम हो सकती हो। इसलिए तुम अपने वशिष्ठ मुनि के ब्राह्मण के घर में गई तो अपने बच्चे के सामने आप वहां पे व्यक्त हो पाई, वहां पे अवतरित आप हो पाई। इस तरह से सरस्वती उन्हें बताते हैं।
देन और एक चीज यहाँ पे बताया गया कि किस तरह से बहुत बड़ा दिखने वाला जो उनको नगर या होता है या अलग अलग जो पहाड़ या नदियां वहां पे इनको अपने राज्य में दिखती है, वो तो वहां पे उसकी जस्ट एक अंगुष्ठी जैसा, एक अंगुली में ही वो सारा बहुत बड़ा सा दिखने वाला एक अंगुष्ठी में ही आ जाता है। तो यहाँ पे वो देश और काल का जो है ना वो भी कंसेप्ट होता है कि कैसे हम लोग एक छोटा सा जब होते हैं तो रास्ता ऐसा बड़ा लंबा दिखता है, पर हम 30,000 40,000 फीट के ऊपर से जब दिखते हैं तो वही कैसे चीज छोटी हो जाती है, और थोड़ा दूर जाते हैं तो इवन अपनी पृथ्वी भी कितनी छोटी हो जाती है। तो वही देश और काल का यहाँ पे ये पता है कि कैसे देश का जो संकल्पना है वो कैसे एक छोटे से चीज में भी बहुत बड़ा चीज हो सकता है। और यही हम लोगों ने देखा ना, साइंस भी इसको सपोर्ट करता है कि किस तरह से एक अणु के अंदर पूरा ब्रह्मांड रहता है, अपने अंदर एक अलग ही विश्व है, कितने सारे सेल्स है ना, 50 ट्रिलियन सेल्स, यहाँ पे कितने सारे प्रकार के बैक्टीरिया है, उनके लिए तो ये शरीर विश्व की बात ही है। एक अणु के अंदर भी बोलते हैं पूरा ब्रह्मांड होता है उसका अपना। तो इस तरह से उनको कई सारे ब्रह्मांड वहां पे दिखाई देते हैं, अलग अलग ऋषि मुनि दिखाई देते हैं, नारद मुनि दिखाई देते हैं ना, अलग अलग प्रकार के कुष्मांड, अलग अलग प्रकार के योनि में प्राणी मात्रा, ये सब कुछ उनको वहां पे दिखाई देता है। तो इस प्रकार से वो फिर पूछती है कि कैसे थैंक करती है, धन्यवाद देती है कि किस तरह से आपके कृपा की वजह से मुझे 3-3 बर्थ यहाँ पे दिखाई देने लग गया, मतलब तो पास वशिष्ठ मुनि का बर्थ जो मैंने अभी देखा और मेरे पति का जो तीसरा, 3-3 बर्थ आपकी वजह से मुझे दिखाई दिए। तो फिर बोलती कि अभी आपने जो मुझे कैपेबल बना दिया है, आपकी वजह से मुझे और भी कुछ कुछ बहुत कुछ याद आने लगा है, तो अपने पहले जन्मों के बारे में भी यहाँ पे जानने लगी हूँ। तो उनको ऐसे करते करते 800 अपने बर्थ दिखाई देते हैं। कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी प्राणी के रूप में, कभी मनुष्य रूप में, कभी किसी ना अलग अलग रूपों में अपने आप को देखती है। तो फिर रियलाइज होता है उन्हें किस तरह से इन सब काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये किन तरह से ये वासना जो विषयों से उत्पन्न हुई जो एंटेंगलमेंट्स है, के क्रेविंग्स है, वासना है, उसमें फंस के कैसे मैंने ये 800 जन्म ले लिए, लेकिन इस जन्म में मैंने अपने बारे में सोचा, सही सोचा, और आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर हुई, तो उसकी वजह से मेरे को ये 800 जन्म भी याद आ गया और सत्य क्या है इससे मैं इस जन्म में अवगत हो गई। तो बड़ा धन्यवाद व्यक्त करती है सरस्वती माँ के सामने। फिर ऐसे ही उनके अंदर संवाद होता है, किस तरह से वो उससे फिर मुक्त होते दिखाई देते इन सब कॉन्सेप्ट्स की वजह से। लेकिन बोलती है ठीक है, अभी मैंने ये सब कुछ तो देख लिया, अभी मुझे न जाके जो अपने पति है उनके साथ क्या हो रहा है वो मुझे जाके देखना है। तो उसके ऊपर फिर वो नेक्स्ट स्टोरी वहां पे पहुंचती है कि पद्मराजा की और उसकी वो लीला सरस्वती और क्या करेंगे, तो वो हम लोग कल देखेंगे। अच्छा, ये सब कुछ कहानी जो हम लोग सुन रहे हैं, वशिष्ठ मुनि जो उत्पत्ति प्रकरण बता रहे हैं यहाँ पे, प्रभु रामचंद्र, इन सब कहानियों से हमें सीख क्या मिलती है? तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि किस तरह से हम लोग यह सब रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह से लगे पड़े हुए हैं, और किस तरह से वो रैट रेस में फंस गए हैं। खाना पीना भूल जाते हैं, काम 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 काम, सोना भी सोते भी नहीं ठीक से, किस तरह से पड़े रहते हैं इन सब चीजों के पीछे। किस लिए? क्या करोगे इतना पैसा कमा के, क्या करोगे इतना सब कुछ करके अपने आयुष्य में? कभी तो बोलते रुक जाओ ना, काम डाउन, कूल डाउन, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा देखो तो सही, थोड़ा सोचो तो सही कि क्यों आए हो यहाँ, क्या पर्पस है मेरी लाइफ का, मैं कौन हूँ, इस जीवन का सत्य क्या है, क्यों हम लोग यहाँ पे आए? थोड़ा सोचो तो सही, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा ठहर जाओ, देखो, थोड़ा प्राणायाम करो, ध्यान करो, देखो अपने शरीर को, इसको जानो कि हम लोग सिर्फ ये शरीर नहीं है, जानो इस जीवन का सत्य क्या है, उसके पीछे थोड़ा अपना एफर्ट्स दो, थोड़ा रुक जाओ। क्यों आप इसमें फंसे हो? क्यों इतना प्रेम को ढूंढते रहते हो इधर उधर? क्यों आनंद को इतना ढूंढते रहते हो इधर उधर? नो, थोड़ा ठहर के देखो तो सही, थोड़ा अंतर्मुखी होके तो सही देखो, जानो तो सही, आप खुद ही प्रेम हो, आप खुद ही शांति हो, आप खुद ही आनंद का वो फव्वारा हो, माउंटेन हो। कहाँ ढूंढ रहे हो इन सब बातों को आउटसाइड?
थोड़ा रुको तो सही, अंदर जाओ तो सही, देखो अंदर। हाँ? इस सत्य से अवगत हो जाओगे तो एक इनफाइनाइट, एक अपशु शक्ति, मनुष्य शक्ति का उदय हमारे अंदर होने लगता है। तो फिर सूक्ष्म से सूक्ष्म जब कुछ बात आती है अहंकार की, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं, छोटा सा छोटा अहंकार बना सकते हैं। और जब बात कुछ आती है सेवा करने की, तो यह विराट रूप, हरि के हजारों हाथ बोलते हैं, विराट रूप धारण करके हम लोग सेवा में डूब सकते हैं। 40 साल के जिस अवसर में गुरुदेव ने देखो कितना बड़ा सेवा कार्य, कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन ला दिया। वसुधैव कुटुंबकम का जो स्वप्न है उसको पूरा कर हमने कितनी बार होते हुए देखा। वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जो होता है अपना WCF, उसमें यह सब बहुत ऑब्वियस हो जाता है। कितने सारे लोग, कितने सारे धर्मों के लोग एकत्रित होते हैं, कितनी सारी जगह से लोग एकत्र आते हैं और प्रेम से कुछ दिन साथ में गुजारते हैं। सारे जो अलग अलग पहलू होते हैं अपने जीवन के, उसका नृत्य के साथ, गायन के साथ, सत्संग के साथ उसका आनंद उठाते हुए हम लोग एक साथ उत्सव मनाते हैं। दिस लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। गुरुदेव कहते हैं यह जीवन एक उत्सव है। क्यों ऐसे मरे मरे से दुखी दुखी होके, क्यों छोटी छोटी बातों के पीछे, वो अपोजिट सेक्स के पीछे, इन वासनाओं के पीछे, पैसों के पीछे क्यों लगे हो इतना? नो, क्यों नहीं जानते कि जीवन का सत्य हमें कहाँ पे लेके जाता है? जब यह सत्य हमें इन सब नॉलेज से, या जो डायरेक्टली पराशक्ति, जो गुरु वचन है, जो हमें गुरुदेव देते हैं, जो ने जो हमें मार्ग दिखाया, उसके ऊपर चलते चलते, इसके राह के ऊपर चलते, तो इस सब का यह अफाट शक्ति, जो पोटेंशियल्स है अपने जीवन का, वह उदय होता है। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज जो होती है जीवन की, वह हमें उसके साथ हम लोग एक रूप होते हैं। और फिर वह जीवन कैसा होता है? एक सॉलिड रॉक की तरह यू एस्टैब्लिश योरसेल्फ, एंड देन ना कोई आपको छूता है, ना कोई आपको नीचे खींच सकता है, ना कोई आपको बहका सकता है। नो, आप बस ऐसे दृढ़ निश्चय में, कम व्हाट में, आई विल वॉक ऑन दिस मार्क, कम व्हाट में, आई विल नॉट लूज माय स्माइल। कुछ भी हो जाए मैं अपना स्माइल नहीं खोऊंगी। इस प्रकार का दृढ़ निश्चय करके हम लोग उसमें स्थित हो जाते हैं। यही इसका फल है, यही इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी। कितना बढ़िया ज्ञान है ना, कितना सही है। वी आर सो ग्रेटफुल टू द मास्टर फॉर ही इज देयर इन लाइफ। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू दैट यू ऑल आर देयर इन माय लाइफ। हम लोग साथ में आते हैं, एक साथ बैठते हैं, इस ज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं। सो नाइस, थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू। गुड गुड गुड। ठीक है, so this session is over to you all now. If you want to express yourself, you are welcome to do so. If you want to ask any question related to this, you are welcome to do so. I have opened the unmute option. You will be able to unmute yourself on your own. Thank you, Someshwar ji, for making it so simple and so interesting, you know, really. Didn't you find, all of you? Yes, a thumbs up to you. Can we appreciate? Yes, amazing. That's very nice. Yeah, Jenny also says. Yeah, yes, that's nice. Very good. So do we have any questions regarding all that, what we have heard, or would you like to share anything? Please go ahead. Please, it's open. Yes. Yes, Usha ji. Well, I just appreciated the summary. It's so easy to follow, and so much knowledge that's clearly stated, and it gets me out of the quagmire of what I'm thinking because it's said so beautifully. Yes. So that's all I have to say. Is just, I'm filled with gratitude for that.
So thank you. Thank you very much. Thank you. Yes, anybody else would like to share? Any questions? Okay, so all I've got it exactly what you wanted to tell them. Yeah, Someshwarji. So this itself is an appreciation to you. Okay. So yesterday, yeah, Sachinji, would you like to say something, or I can continue with the story? I would love to say from yesterday. It's pending. Whatever you tell. No, Yeah. please continue. Okay. I would like to Okay. hear. Yeah. Yeah. So there's a very beautiful story which I really wanted to share it with you all. Once upon a time, long, long ago, there was a very rich royal family with a king and a queen and a prince and all his ministers, everybody were there. And then one day they had a play in the stage in their um, city. So they had a play there. Now in that play, it was like the Prince of Kashi was already there, but they had a role for the Princess of Kashi. Now, from where to get that Princess of Kashi? Kashi is a city in Banaras in India. For Usha ji, I'm saying that. Then what happened? Now everybody started from where to get the princess. So they said, okay, our prince, he's 5 years old, the queen said, and it's okay if we make him the princess. So they made him the princess. He was looking very cute and very pretty. So in those days, like we have just, take a selfie or take a click, come on, be quick. It was not that way. So the queen, asked the painters to paint his picture, and write down, this is the Princess of Kashi and the date, just to remember. Okay, that is what it was. Now, as the prince grows up, he comes to a teenage of 18, 20, 21. He becomes like that. So one day he was just going around in his palace, and suddenly he goes to the cellar. That is the underground, some place where you keep all your stuff there unwanted. And he goes there, and somehow he looks into that picture of that princess. Now he was so, in love with that princess. He says, he sees the date also. He says, yeah, right. Matlab, she's of my age only. Ye to mere age ki hi hai. Matlab, we can go together well. Now he wanted to marry her. He said, I'm going to marry this princess, because it was written, the Princess of Kashi. And he said, it's a royal family, princess, no worries about it. So come on, I'll marry her. And then what happens? Now he couldn't express that feeling. So he went on becoming a bit, sad, living aloof or something, whatever it happens like that. So his mother sees, the queen sees, and he says something is wrong. Now how to get it out from him? So they asked the minister, one old minister, aged, he said, please go ahead and see what is wrong with the prince. And the minister comes and he says, what happened, dear? How are you? What are you feeling? Come on, you can share it with me. He takes him for a walk outside somewhere like this in the gardens. And then they keep on talking. Ultimately, the prince comes out with that problem which he had. He says, now this is the thing. I am in love with the princess. Now how to find her and how to tell? She said, well, where is that princess? And if it is a prince of Kashi, matlab, like, it's very good. No worries about it. No family rights, nothing. Come on, we can go ahead. So the minister goes, to his side to find out exactly what it is that is troubling. So the prince shares, this is how I have gone to the cellar and I have seen that picture there. And so he says, oh, wow, that is now something is clicking him, the minister also, because it is a story like 15 years back of that past. So he said, okay, you take me there. Let's see who is that princess. So the prince takes him there. They go to the cellar. They see that picture. And he says, the minister says, okay, now he got it exactly what it is. So he says, okay, just sit down. So he makes the prince sit down. And then he shares with him. What he shares? He shares, this is you yourself.
15 years back, there was a play and we made you the princess because you look so, 5-year-old child. So you don't come to know if it's a male or a female. And they dressed him up like a princess. And this is you. Now, when he comes to know this is me, what happens to him? Now, there is no second. He's the one. Right? First thing. So what happens there? He comes into that Advaits. If you look it into the spirituality, the non-dualism. Because now what happens? There is no two. He is the only one there. Because he comes to know I am the only one. Now what happens? But he sees it with his eyes open. That is okay. You are looking at the truth that you are one. Isn't it? So then he comes to know he is the only one there. And then what happens? That sankalpa of getting married to that princess also drops. Why? Now there is nothing, no two. So why that sankalpa of getting married? So that also drops. You see, in our life also, when we go like this, we are seeing everything as two, something outside, in the Maya, in the world, something is there that I want. And then the mind keeps on grasping to that. And then what happens? The minute you are in yourself, you come, it dawns, that knowledge dawns. It means what? That you become one with that non-dualism. The dualism ends there. And then what happens? Then there is nothing. The mind doesn't need anything. It becomes non-grasping. That जो चाहिए 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 करते रहते हैं, that becomes sharp. That mind becomes non-grasping, and then it starts going inward. So instead of outward, now the journey is inward. Isn't that a change, a transcending thing, isn't it, in our life? Do you feel that? Yeah. Yes, and when you become one with that Brahman, what happens then? Everything is in the mind, it becomes sharp. Just that self remains. So there are no, popping ups of your thoughts. Nothing is there like that. So in the same way, till we see two, Rag and Dvesh, comes up, everything will come up. Those two things will come up. But when it merges into that one, I am that pure consciousness. When you have that feeling with you, then you are the Brahman, isn't it? It's so simple, actually. Yeah. Do you find that? And then what rises with that, Yeah, thank you. What rises with that? Your Viveka rises with that. That is, takes you to the discrimination of the eternal and what we feel is as real. That is that non-eternal. Yeah. So that Viveka is the discrimination which helps you to analyze it and take it further. Yes. So, yes, everybody enjoyed the story. I don't want to go more deep in that. It's a very vast subject, but let us take moment by moment. Yeah. Let's It's very nice. Thank you. Amazing. No, short and sweet, but it actually passes on very big message. Very, very impactful. Thank you so much. Thank you. Yeah, any questions you would like to ask? See, we are moving ahead every day. When Someshwar ji says today is the 30th day, today is the 50th day, meanwhile, what is going to happen? We are actually moving day by day. So moment by moment, we are going ahead, isn't it? That's what it is. Yeah. Yeah. Anybody else would like to share or ask any questions? You are free to do that. बहुत बढ़िया बताया. किसी के मन में कुछ प्रश्न है या अपने आप को व्यक्त करना चाहते हैं तो जरूर आप कर सकते हैं. किसी भी लैंग्वेज में, जरूरी नहीं कि आप अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग करें. आप हिंदी, मराठी, इंग्लिश, किसी भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो, आप अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं.
Sachin ji, would you like to contribute something? Actually, today my network connectivity is not good, so I can't start my video. No problem. I would like to hear today. I would like to see whether. Sure. Yes, it's a good idea to hear. चलो, किसके मन में क्या है बोलना है बोलो. नए लोगों को बोलने के लिए बोलते हैं. Jenny ji is new with us. Jenny ji, आप बोलिए. Yeah, no, I just wanted to say it's an excellent story. It's so, so relatable, and it brings home the point very well of duality and non-duality. Very simple, and it's profound also. Thank you so much. Very well said, Jenny ji. Thank you so much for giving that feedback. Anything else? किसी को कुछ कहना है? Uma ji is new with us. Uma ji, would you like to say something? Neena ji. ठीक. तो आज का यह इट्स ऑलरेडी 9 o'clock. यदि किसी को कुछ कहना है तो अनम्यूट करके बात करें, नहीं तो फिर आज का यह सत्र हम लोग यहाँ पे समापन करते हैं. आज स्वल्प विराम लेते हैं ताकि पुनः हम लोग एक बार कल फिर से मिल सके. We'll pause here so that we can meet tomorrow. जय गुरुदेव.